Hi, this is Parveen Khanna and I welcome you all in today's video. And as you can see, students, we are going to discuss about complex sentence formation. So it is going to be very important video, and stay tuned till end of this video because we are going to discuss so many points which often confuse you people, and especially to the students who are from state-run schools pass out. For maximum time I will try to speak in Hindi. मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा to let you people understand, ताकि आप उसको समझ सकें, right? And let us start complex sentence formation video. And the students, let us start from the basics. ये basically complex sentences होते क्या हैं? Okay, so and before that we need to understand what are clauses. ये clauses क्या होते हैं? So in simple language we can say clauses are meaningful sentences or phrases which are complete, right? अब जैसे simply sentence है, I am a teacher, or you are a student and he goes to market. Right, he goes to market daily. So these are meaningful sentences, or these can be called clauses. And further, if you will be getting in detail of clauses, what we can say is there are types of clauses. So first of all, there is an independent clause. एक independent clause एक sentence होता है जो कि जिसकी अपनी खुद की एक sense होती है, राइट वो अगर अकेला है तो उसकी खुद की सेंस रहेगी. एंड देन इज डिपेंडेंट क्लाउज, यानी कि इसको साथ में इंडिपेंडेंट क्लाउज चाहिए. हम एग्जाम्पल से ये बात समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज की अकेले की सेंस नहीं रहती. दिस सेंटेंस नीड्स independent clause. So here is an example. The graph gives information about Indians who smoke. So यहाँ पर देखते हैं. So independent clause is the graph gives information. Now this alone sentence, इस अकेले sentence की sense है. But Indians who smoke, this alone sentence is not having any sense. That's why this sentence needs independent clause, and the final sentence becomes the graph gives information about Indians who smoke, right? So that is very simple example of complex sentence. Now बात को आगे लेके चलते हैं, आगे और समझते हैं और कैसे कैसे sentences बनते हैं, राइट? तो अभी के लिए सिंपल हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाउजेस. गॉट दैट? यानी कि ये सेट रहेगा, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लाउजेस रहेंगे. अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 इंडिपेंडेंट हों या दोनों डिपेंडेंट हों या एक इंडिपेंडेंट या एक डिपेंडेंट. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन, एंड लेट अस सी वी हैव एग्जाम्पल्स. नाउ इन एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, अदरवाइज they will have to face problem. Now in this case, students, both are independent clauses. Now you can see, now these sentences alone have their meaning, right? So let's move to the next example. People who smoke face risk of cancer. Now in this case, students, both are dependent clauses. So people who smoke, राइट, लोग जो स्मोक करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं. नाउ दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस. नाउ दिस नीड्स फर्दर दिस फ्रेज, फेस रिस्क ऑफ कैंसर. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. गॉड हेल्प्स पीपल. नाउ गॉड हेल्प्स पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स. इन दिस केस your first sentence is independent clause and your second sentence is dependent clause, right? So I hope now things are understandable to you. ये clauses क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा. आगे चलते हैं. Now we are going to discuss tools of complex sentence formation. Now first of all we need pronoun. Now what is pronoun? हालांकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है पहले ये प्रोनाउंस वगैरह क्या होते हैं, और अभी के लिए सिंपल मैं लैंग्वेज में बता देता हूँ. वर्ड्स, pronoun are words that we use in place of noun, right? तो जैसे हम आमतौर पे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, वी, यू, दे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो यू कैन गो थ्रू दिस टेबल, यू कैन हैव स्नैपशॉट ऑफ दिस फ्रेम, right? So I'm not going to
tell you these things in detail over here, but I will be telling you how pronouns help you in making complex sentences. हम mostly हम who को use करते हैं, हम which को use करते हैं, हम where को use करते हैं, हम इन devices को use करते हैं. So let's have sentences. Okay, so table show students who topped an exam. Now in this case means table क्या है, वो show कर रहा है, shows students who topped in exams. Further example, the way in which information is taught can vary greatly, right? Now again there are two informations which are joined. The way in which means the way of information by which the information is taught vary greatly. Further, the desks are grouped that face directly each other. Okay, so the students whose notebooks are not submitted shall be penalized. यानी कि students जिनकी notebook submit नहीं हुई, एक इन्फॉर्मेशन ये है उनको सजा दी जाएगी, एक इन्फॉर्मेशन ये है. तो दोनों को इकट्ठा जोड़ के हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया. स्टूडेंट्स हुज नोटबुक्स आर नॉट सबमिटेड शैल बी पेनलाइज्ड. ओके, अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट डिवाइस फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज कंजंक्शंस. आमतौर पे हम कंजंक्शंस को क्या कह सकते हैं, जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. अब जैसे हमने एंड के बारे में बताया, right? We have also read about because, and then there are likewise so many other conjunctions like yet is there, but is there, nor, before, etc, etc. So let us have sentences. Students come to academy for learning English. Now we have for, right? For learning English. This is your independent clause and this is your dependent clause. Next example, he worked hard but he failed. Now both are independent clauses. He worked hard but he failed. Next, he goes home after attending class. Now this is your independent and this is your dependent clause. Okay, so means we are having two informations. वो घर जाता है क्लास अटेंड करने के बाद. सो मोटे तौर पे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होंगे जिनमें दो या तीन या दो इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होंगी. एंड बी केयरफुल स्टूडेंट्स, डोंट एवर ट्राई टू मेक लेंथी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बाय पुटिंग 4-5 clauses. दैट वे यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम आएगी और आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं बनेंगे. तो आपको दो या तीन, मैक्सिमम यू आर टू ट्राई विद 2-3 clauses, not more than that. आगे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द परमिशन कैन बी ग्रांटेड अनलेस अथॉरिटीज आर नॉट एश्योर्ड बाय स्टूडेंट्स. ओके, परमिशन नहीं दी जा सकती जब तक कि अथॉरिटीज को स्टूडेंट्स भरोसा नहीं दिलाते, तसल्ली नहीं करते स्टूडेंट्स. Next, either state encourage citizens to take care of their health or impose fine on overweight ones. या तो स्टेट एनकरेज करे सिटीजन्स को कि वो अपनी सेहत का ख्याल करें, और या फिर वो फाइन लगाएं जो ओवरवेट है उनके ऊपर. सो हियर अगेन देयर आर टू इंफॉर्मेशंस व्हिच हैव बीन जॉइंड बाय ईदर एंड और. ऑलराइट, देयर इज ईदर एंड और. मूविंग फर्दर. Okay, government need to tell farmers whether bill passed against farmers will be taken back or they intensify their protest. Now again there are two informations and we are making condition कि सरकार को किसानों को बताना चाहिए कि जो बिल जो उनके खिलाफ पास किया गया है वो वापस लिया जाएगा या फिर वो अपने प्रोटेस्ट को और तेज करें. ओके, और they intensify their protest, right? Okay, so I hope that thing was understood. Now moving further to third tool of making sentences. Now these are contracting connectors. Now when we are contrasting, okay, जब हमको contrast करना होता है, right, we often use by contrast, nonetheless, on the other hand. Now let's see example. He did not work hard, otherwise he could have been selected. राइट, अदरवाइज. नाउ कंट्रास्ट इज हैपनिंग. कंट्रास्ट में क्या हो गया बेसिकली कि दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस बना रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, नहीं तो वो सेलेक्ट हो जाता. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. द प्रपोर्शन ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स वॉज हाई एंड फीमेल्स वर इन माइनॉरिटी. वेराज, अब जहाँ से वेराज जो है वो कंट्रास्ट कर रहा है कि जहाँ की फीमेल्स माइनॉरिटी में थी. नेक्स्ट सेंटेंस,
डिस्पाइट हैवी रेन ही मैनेज टू रीच कॉलेज। अब एक तरफ तो है बरसात बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ वो फिर भी कॉलेज पहुंच गया। तभी करके हमने कहा बहुत तेज बरसात के बावजूद ही मैनेज टू रीच कॉलेज, वो कॉलेज पहुंच गया। नेक्स्ट सेंटेंस, although exam results were disappointing, pupils are ready to burn midnight oil। हालांकि एग्ज़ाम के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे, पर स्टूडेंट्स जो हैं वो दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं। Right? So contrasting connectors, I hope this thing is making sense. Now moving further to the fifth tool of making complex sentences. Now these are exemplifying connectors. Now in this case you would have used these connectors very often. Here is for example the first example, English can be learned in number of ways. For example, watching English movie is quite helpful. Now in this case we are talking about particular example. Okay, watching movie is very helpful. Further, people who are blind can enjoy printed word just like everyone else because of braille system. Now just like, जैसे कि, now this is again giving you example. Okay, जैसे कि हर कोई, okay, क्योंकि उनके पास braille system है। Next example, there are many causes of air pollution. Many causes of air pollution such as exhaust from vehicles, smoke from factories. Now these are causes of air pollution. The escalating crime against women is in country can be taken as an evidence to illustrate failure of law and order. Alright, so I hope these examples are understood, and now to much extent complex sentence formation is easy for you and you guys can practice yourself. Then further, we also make complex sentences using prepositions, right? So prepositions are also very helpful, and students, I have made complete video on prepositions here on your screen top. You will be finding a link which you can use. आप इस लिंक को यूज कर सकते हैं prepositions के बारे में और जानकारी लेने के लिए। Right? So braille is a system of writing for blind persons in which raised dots represent letters of alphabets। यानी कि ब्रेल एक सिस्टम है लिखने के लिए अंधे लोगों के लिए जिसमें रेज डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। राइट, अब इनसे मैंने और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, तो हम प्रपोजिशन से भी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। वी विल यूज प्रपोजिशंस फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ क्राइम कैन बी इरेडिकेटेड बाय मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। ओके, राइट, देन फर्दर, बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल ही चैंट्स द नेम ऑफ गॉड। राइट, okay, again we see, so he chants the name of God is actually the main information, or we can say independent clause, which is supporting before going to examination hall. And then further, he has been living in city since he was promoted to post of bank manager. Right, so again these are some examples of complex sentences. Okay, and thanks for watching this video. Okay, and I hope to much extent the information I have given is understood.